Hello students, I hope all of you are doing fine. In the previous video we have started the chapter our environment. First of all we have categorized the environment into two parts, that is natural environment and human made environment. Further, we categorize human environment into two more parts, that are biotic and abiotic. After that, we have discussed about the domains of the environment. So far, we have studied about atmosphere, lithosphere, and hydrosphere. The fourth domain of atmosphere is biosphere. We are going to discuss about biosphere in the today's video. After discussing about the three domains of the environment, we have also discussed about the biotic and abiotic interaction. How the biotic components and the abiotic components are dependent upon each other for the growth of each other and further nourishing the growth of environment. Now, as you must have remembered that at the last part of the previous video, we were discussing biotic and abiotic interaction, and in that we learnt about how abiotic elements also cause new species of plants and animals to evolve. So, as you have learned in the previous video, that all the domains of environment, that is hydrosphere, lithosphere, and atmosphere, are are responsible for the existence of life in the environment. So now in the today's video we'll discuss about the biosphere and how biosphere is nothing but a place where there is interaction between the other three domains of the environment. Now, biosphere. What is biosphere? The small zone of interaction between air, water, and land where living beings survive and flourish is called the biosphere or the living world. So, एक ऐसा जोन जहाँ पे एयर, वाटर एंड लैंड जहाँ पे इंटरेक्ट कर रही हो, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन हो और जहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल हो, वो जो जोन है वो बायोस्फीयर है. जो जगह पे हम रहते हैं वो क्या है, वो बायोस्फीयर है. जनरली वी लिव टू प्रेफर इन द बायोस्फीयर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेयर है, नीचे लिथोस्फेयर है एंड हाइड्रोस्फेयर जो हम जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए यूज करते हैं. द बायोस्फीयर इज अ यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ as it is the only planet in the solar system which supports life. So, as you must be aware, that Earth is the only planet which supports life, and one of the reason for that is the existence of biosphere. The biosphere provides various life forms all the necessities of life. तो बायोस्फीयर क्या करता है, जितनी भी नेसेसिटीज है लाइफ की, मतलब जितनी भी जरूरतें हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, वो सब बायोस्फीयर प्रोवाइड करता है. आउटसाइड द डोमेन ऑफ बायोस्फीयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल. सो बायोस्फीयर के बाहर लाइफ पॉसिबल नहीं है. अगर आप एटमॉस्फेयर पे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, लिथोस्फीयर में जाएंगे वहाँ पे भी नहीं है. जो लाइफ जो ओनली पॉसिबल है वो बायोस्फीयर के अंदर पॉसिबल है, जहाँ पे तीनों का इंट्रैक्शन होता है. यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का इंट्रैक्शन जहाँ पे होगा, वो जो स्फीयर है, जोन ऑफ इंट्रैक्शन बायोस्फीयर लाइफ से, वहीं पे पॉसिबल होगी. The biosphere is comprised of two major elements, producers and consumers. The producers or autotrophs are capable of producing their own food directly from the abiotic elements of the environment. So, जो biosphere है वो दो तरह के elements उसके अंदर होते हैं, एक producers और एक consumers. Producers वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब कि जो उनका food होता है वो खुद produce करते हैं. कैसे? By using the abiotic elements of the environment. As you must remember, what are the abiotic elements of the environment? That land, air, water and all these kind of things are the abiotic elements of the natural environment. So जो autotrophs होते हैं वो इन सबको यूज करके अपना फूड बनाते हैं, और इसका एग्जांपल है और ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. सो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं. Organisms that are not able to produce food directly from the environment are called heterotrophs, which include consumers like animals and humans. So, what do? We humans don't produce our food directly from the environment. For example, we grow plants and then eat it. So, जो plants हैं वो autotrophs हैं और हम जो हैं वो heterotrophs हैं, क्योंकि हम directly environment से produce नहीं कर रहे हैं. जो ऑटोट्रॉफ है उसको यूज करके हम अपना फूड बना रहे हैं, तो हम क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स. एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफ्स, and plants and other producers who produce their food directly from the environment are called autotrophs. These consumers can be herbivores or carnivores. Plant eaters such as cattle, deer, elephant, etc. are herbivore, while
flesh eaters like lion, leopard, wolf and hyena are carnivores. तो बोल रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो एनिमल्स से कंज्यूमर्स जो भी हैं, वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स. हर्बीवोर्स वो जो प्लांट ईटर्स हैं और कार्निवोर्स वो जो फ्लैश ईटर्स हैं, मतलब कि जो मीट वगैरह ये सब चीजें खाते हैं, जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, वो क्या हो गए, वो कार्निवोर्स हो गए. और हर्बीवोर्स जो प्लांट्स वगैरह को खाते हैं. ओमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. एंड द थर्ड टाइप इज ओमनिवोर्स विच ईट बोथ द प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एज वेल. एग्जाम्पल्स के हैं क्रो, बियर एंड ह्यूमंस. Humans are also omnivores, right? Now, I hope biosphere is clear to you. It is nothing but is a zone of interaction of atmosphere, lithosphere and hydrosphere. Okay, now moving on, we'll discuss about the ecosystem. Ecosystem is a word that you must have heard many times before in the previous classes. It is generally a word that is confused by biosphere, but biosphere and ecosystem are two different things. Now we'll look at the ecosystem. Ecosystem is a system created by the interaction of all living organisms with one another and with the abiotic elements of the environment in which they live. So, as we have discussed in the biosphere is the interaction of atmosphere, hydrosphere and lithosphere. But ecosystem is the interaction of all living organisms living with one another and with the abiotic elements of the environment in which they live. So, it is the interaction of organisms as well as abiotic elements of environment, whereas biosphere is only the interaction of abiotic elements of environment. That is the basic difference between the ecosystem and the biosphere. I hope you won't get confused in it. All plants, animals and humans depend on each other and on the immediate surroundings of the natural environment. Various ecosystems are desert, mountains, forests, grassland, rivers, oceans and even small lakes and ponds. So बोल रहा है कि all plants, animals and humans depend on each other. We have read about it in the biotic and abiotic interaction. Now it is saying that not only the biotic and abiotic elements of the environment depend upon each other, also the natural and human-made environment depend on each other, and all the organisms, all the plants and animals depend on each other for and the immediate surrounding of the natural environment for survival. I don't think this will be much difficult for you to understand, because you know we depend on plants and animals, and they also depend on us for their growth, right? Now, the examples of various ecosystems are given, that is desert, mountain, forest, grassland, rivers, oceans and even small lakes and ponds. मतलब ये सब क्या है, ये इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है. यहाँ पे क्या है कि एक इंटरेक्शन है between the plants and animals that exist, also all types of organisms that depend on it. And then we'll look at the lake ecosystem. In a lake ecosystem, the sunlight that falls on the water promotes the growth of algae. ठीक है, जो सनलाइट जो लेक में पड़ती है वो एल्गे आपने देखा ग्रीन सा जो होता है पॉन्ड्स में या लेक वगैरह में, वो एल्गे है. This algae produces oxygen for animals like fish and frogs living in the lake and provides food for microscopic animals. So जो algae जो है वो जो अंडर वाटर जो लेक सिस्टम में जो algae है जो कि सनलाइट से ग्रो हो रहा है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसको, फिश और फ्रॉग्स को, वो एनिमल्स जो लेक्स में रहते हैं. And furthermore, it provides food for microscopic animals. Fish eat the microscopic animals, absorb oxygen present in the water and expel carbon dioxide, which helps the growth of plants. तो फिश क्या करती हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है उनको खाती हैं. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, वो एल्गे खा रहे हैं और फिर उससे फिश उन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ईट खा रही है. उसके बाद क्या किया, वो उस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कर रहे हैं, जो कि वापस से प्लांट्स यूज कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए. इफ द एल्गे डिसअपीयर्ड एवरीथिंग एल्स वुड बी अफेक्टेड. सो बेसिकली वी हैव अ चेन हियर. सबसे पहले क्या है कि एल्गे है, एल्गे सनलाइट से ऑक्सीजन पॉन्ड लेक में ग्रो कर रहा है. उस एल्गे को तो फिश एंड फ्रॉक्स वगैरह खा रहे हैं. फिर उन फिश और जो है जो मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल है वो उस एल्गे को खा रहे हैं. फिर उन माइक्रोस्कोपिक एनिमल को फिश एंड फ्रॉक्स खा रहे हैं. फिर वो फिश एंड फ्रॉक्स क्या कर रहे हैं,
उनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म खाने के बाद उनकी जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस कर रहे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से प्लांट्स यूज कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो एक तरीके से ये पूरी एक चेन बन गई और हर एक ऑर्गेनिज्म इसमें एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसमें से कोई एक भी डिसअपेयर हो जाए, मान लो अगर एल्गी डिसअपेयर हो जाए या फिश डिसअपेयर हो जाए, तो जो चेन है वो टूट जाएगी और जो पूरा इकोसिस्टम की जो चेन है वो भी टूट जाएगी। So if the algae disappeared, everything else would be affected. Microorganisms would not have enough food, fish would not have enough oxygen, and plants would have lesser carbon dioxide available, which is necessary for their growth. So as we have discussed कि अगर इनमें से कोई भी चीज, अगर मान लो फिश algae disappear हो गया तो everything else will be disappeared. Microorganisms disappear हो गए तो fish के लिए और fox के लिए food नहीं बचेगा। अगर fish के enough oxygen नहीं हुआ तो plant के पास carbon dioxide नहीं होगा growth के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये सब एक दूसरे के ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। नाउ we'll look about humans and their impact on environment। मतलब humans का impact environment पे क्या है। Humans are the only species that has impacted the environment to a very great extent। बोल रहा है कि जो humans है वो एक लौते species है, मतलब एक लौते प्राणी हैं जिन्होंने environment को इतने ग्रेट एक्सटेंट पे इफेक्ट किया, मतलब इतना हद तक इफेक्ट किया है। इन द एफर्ट टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल, सेफ एंड प्रोग्रेसिव, ह्यूमंस हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग देयर सराउंडिंग्स फॉर सेंचुरीज। बोल रहा है कि अपनी लाइफ को, मतलब प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपनी लाइफ को मोर कंफर्टेबल करने के लिए ह्यूमंस ने जितने भी इन्वेंशंस किए, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गए या कार्स हो गई या एसीज हो गए या फिर रेफ्रिजरेटर्स हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये उसकी जो सराउंडिंग है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको हैरेस कर रहे हैं। जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, इसका रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। तो बोल रहा है कि ये सब जो चीज़ें हैं जो हम एफर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को मोर कंफर्टेबल बनाने का, सेफ बनाने का, प्रोग्रेसिव बनाने का, ये सब कुछ ये एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है इनका। And in the last 1 century, technological advancement has made this experiment even more ruthless and destructive। तो बोल रहा है कि बट पिछले 100 सालों में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, जैसे कि फैक्ट्री सेटअप करना या फिर कार्स वगैरह का इतना हो जाना सड़कों पे, वो उसने इस एनवायरनमेंट को और बुरा बना दिया है और रूथलेस बना दिया है, मतलब और हार्ड बना दिया है और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बना दिया है। Human activities such as agriculture, industry, transport, construction have adversely affected the environment in many ways which now pose a grave threat to environment। बोल रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि एग्रीकल्चर कैसे एक तरीके से एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी। अगर आपने मान लीजिए एक क्रॉप बार बार लगाई, मतलब किसी आपने जमीन पे आप क्रॉप लगाते गए और आपने ढंग से उसको फर्टिलाइजर ये सब प्रोवाइड नहीं किया, आपने केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर दिया, धीरे धीरे क्या है उस लैंड की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इनफैक्ट वो क्या है, वो एनवायरनमेंट पे एक बैड इफेक्ट हो गया उसका। और सेकंड इज इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह का जो वेस्ट है वो रिवर्स में जाता है। फैक्ट्रीज जो धुआं वगैरह छोड़ती है उससे एयर पॉल्यूशन होता है, तो एक तरीके से क्या इम्पैक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट जितने की जो कार्स वगैरह हो गई, बस हो गई, जितने भी ट्रांसपोर्ट है वो पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन साउंड पॉल्यूशन होता है। आपने बताया होगा जो बड़े बड़े मशीन्स होती हैं उससे कितना साउंड निकलता है। तो ये सब क्या है, इन्होंने एडवर्सली इफेक्ट किया एनवायरनमेंट को और ये एक थ्रेट बन गया एनवायरनमेंट के लिए, मतलब ये उसका जो सिस्टम है उसको बेकार कर सकते हैं। द फॉरेस्ट आर वैनिशिंग, polar ice caps are melting, many plants and animals have become extinct due to rapid climatic change। बोल रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो खत्म होते जा रहे हैं, जो पोलर आइस कैप्स है, मतलब कि जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही है और जो जितने भी बहुत से एनिमल्स एंड बर्ड्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं जो रैपिड क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से। एंड पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर हैज रीच्ड डेंजरस लेवल्स। तो बोल रहा है कि जो पॉल्यूशन है लैंड का, वाटर का, एयर का, वो एकदम डेंजरस लेवल पहुंच गया। मतलब अब इससे ज़्यादा होगा तो ये एक तरीके से हमारे सर्वाइवल पे इफेक्ट कर सकता है। We therefore need to take measures to stop this environmental damage immediately। तो बोल रहा है कि हमें कुछ measures लेने चाहिए जिससे कि हम इस environmental damage को रोक सकें। तो क्या measures हो सकते हैं, मतलब we as students what can we do? We can run awareness campaigns or we can learn about the learn about the ways which could be which causes less pollution in the atmosphere, right? So we as a future generation should think about it, because it's not only about our survival but it's also about our future generations survival, right? So if we are to leave the healthy planet for our generations, बोल रहा है कि अगर हमें अपनी future generations के लिए healthy planet छोड़ना मतलब रखना है तो हमें जो environmental damage है उसको immediately रोकना पड़ेगा। So I guess that's it for the chapter.
And in the next class, I will send you the PDF of question answers of this chapter, and then after that we'll continue with the second part of second chapter of geography again. Okay? And now this something to look, make a list of all the pollutants that you use at home in your daily life. Also write how each one of these pollutes our environment. So this is something for you to do on your own. You should do these activities that are given in the book. It will only enhance your work ethics, and you will enjoy it as well. So I hope all of you have understood the chapter, and if there's any doubt, you can contact me through the app, or you can take my WhatsApp number from the Chiti ma'am and contact me there as well. Thank you.